हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ended the rule of East India Company and transferred power to British Crown. Lord Canning, 1856 to 1862, became the first Viceroy of India. He was the last Governor General of India before the Viceroy system was established. Lord Clive established the British rule in Bengal after Battle of Plassey, 1757. ठीक। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट 1793। लॉर्ड रिपन known for Ilbert Bill 1883 and local self-government 1882. Queen Victoria's proclamation was read out by Lord Canning on 1st November 1858 at Allahabad. Queen Victoria's proclamation was read out on 1st November 1858 in Allahabad by Lord Canning. It formally ended company rule and started British Crown rule in India. It assured India of religious toleration, non-annexation, and the right to government jobs. Calcutta was the capital of British India until 1911. Bombay and Madras important colonial cities, but not the place of proclamation. The right to adopt and hire in place of one's son was re-established by Queen's announcement of 1858. Doctrine of lapse, introduced by Lord Dalhousie, was abolished by Queen Victoria's proclamation in 1858. This restored the right of Indian rulers to adopt and hire if they had no biological son. Queen Victoria was appointed the Empress of India in 1877. In 1877, Queen Victoria was officially declared the Empress of India, Kesari Hind, during the Delhi Darbar under Viceroy Lord Lytton. This formalized British control over इंडिया। मतलब 1877 में इनको पूरा घोषित कर दिया गया। विच गवर्नर जनरल एबोलिश्ड स्लेवरी? तो एलनबर्ग ने। स्लेवरी वॉज एबोलिश्ड बाई in India by Act 5 of 1843 under Governor General Lord Linlithgow. Further, in 1860, Indian Penal Code made slavery a punishable offence. Which one of the following is correctly matched? Lord Cornwallis permanent settlement सही है। लॉर्ड वेलेस्ली नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली ने मास्टरलियन एक्टिविटी नहीं किया था। लॉर्ड डलहौजी ने सब्सिडरी अलायंस नहीं, वो वेलेस्ले ने किया था सब्सिडरी अलायंस। ये मास्टरलियन एक्टिविटी लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 विच फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू इन बंगाल। Masterly inactivity Lord Lawrence, not Wellesley. Subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley, not Dalhousie. INC was found in 1885 under Lord Dufferin's tenure, और लॉर्ड डफरिन ने ही 1886 में बर्मा को कब्जे में ले लिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस सही है। डलहौजी सही है। लॉरेंस ने मास्टरली इनएक्टिविटी किया था। मास्टरली इनएक्टिविटी वाज एसोसिएटेड विद लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड कैनिंग 1856 to 1862 introduced policies like Indian Council Act 1861 and Widow Remarriage Act 1856. Permanent settlement was introduced during the tenure of लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक। परमानेंट सेटलमेंट कब? 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 टू फिक्स लैंड रेवेन्यू इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। जमींदार्स वेर गिविंग हेरिडेटरी राइट्स ओवर लैंड बट हैड टू पे ए फिक्स्ड टैक्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स सेकेंड एंग्लो मराठा वार ये लगभग गलत है। लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट 17th रेगुलेशन ऑफ 1829 यानी कि सती प्रथा को ख़त्म करना, ये सही है। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 to 1805 was fought during the time of Lord Wellesley,
not Lord Hastings. Lord Hastings 1813 to 1823 fought the Third Anglo-Maratha War 1817 to 1818 leading the end of Maratha रूल, मतलब लॉर्ड हेस्टिंग ने ख़त्म किया था। परमानेंट सेटलमेंट 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस सब्सिडरी अलायंस 1798 लॉर्ड वेलेस्ले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1748 लॉर्ड डलहौजी एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 1843 लॉर्ड एलनबर्ग फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया 1858 लॉर्ड कैनिंग क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858 एबोलिश डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इम्प्रेस ऑफ इंडिया टाइटल 1877 क्वीन विक्टोरिया लॉर्ड रिपन के ने वो किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सिविल सर्विसेज वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस फोर्ट विलियम कॉलेज की भी 1801 में शायद ऐसे ही कुछ किया था। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रेलवेज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय विडो रीमैरिज एक्ट 1856 ईश्वर चंद विद्यासागर के ये पहले वाइसराय भी थे और इन्होंने ही 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन भी पढ़ा था इलाहाबाद में। लॉर्ड एलनबर्ग एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 1843 व्हेन वाज पेशवाशिप एबोलिश्ड 1818 में पेशवाशिप was abolished in 1818 after the Third Anglo-Maratha War 1817 to 1818 Lord Hastings defeated Peshwa Bajirao II who was later sent to Bithur Kanpur with a pension। पेशवा बाजीराव II को एंग्लो मराठा वार अच्छा पेशवाशिप was abolished in 1818 after the Third Anglo-Maratha War। ठीक। लॉर्ड हेस्टिंग डिफीटेड पेशवा बाजीराव II अच्छा ये लास्ट थे लगभग was sent to Bithur Kanpur with a pension। The British annexed all Peshwa territories integrating them into Bombay Presidency। ओके 1858 में क्या हुआ था? एंड ऑफ मुगल रूल 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1802 Treaty of Basin when Bajirao II accepted British protection but retained his position। Who among the following negotiated subordinate alliance in 1817 to 1880 with the princely state of Rajputana? Charles Metcalfe। Lord Hastings aimed to establish British paramountcy in India। He negotiated alliance with Rajput states, using them as allies against Marathas and Pindaris। Who among the following negotiated subordinate alliance of 1817 to 18 with the princely state of Rajputs? Charles Metcalfe। Lord Hastings aimed establishing British paramountcy in India। He negotiated alliance with Rajput state, using them as allies against Marathas and Pindaris। Charles Metcalfe was entrusted with negotiating alliance with Rajput states। David O'Carthnally, known for his role in Anglo-Nepal War। आर्थर वेलेस्ली की जनरल सेकेंड एंग्लो मराठा वार। जॉन जॉर्ज का कोई वो नहीं था। अच्छा इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है परमानेंट। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस सही है। सर जॉन सोर एंग्लो नेपाल वार नहीं है, सही नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग थर्ड एंग्लो मराठा वार सही है। एंग्लो नेपाल वार 1814 to 1816 occurred under Lord Hastings, not Sir John Soar। Treaty of Sugauli 1816 was signed leading the British annexation of Kumayu, Garhwal and Sikkim। Sir John Soar 1793 to 1798 was known for his non-intervention policy and handling the succession crisis in Awadh and Marathas। Which one of the following is correctly matched?
लॉर्ड एनलबर्ग एनेक्सेशन ऑफ अवध, नहीं ये नहीं है, डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ सिंध, नाना ये इलनबर्ग ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ना हाँ सही है मैसूर वार फोर्थ वाला। सर जॉन शोर एंग्लो मराठा वार, नहीं फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 took place under Lord Wellesley's tenure. Tipu Sultan was defeated and killed leading the British annexation of Mysore. Lord Ellingberg 1842 to 44 annexed Sindh in 1843. ठीक। लॉर्ड डलहौजी annexed Awadh in 1856. थर्ड एंग्लो मराठा was Lord Hastings tenure 1817 to 1818. Which one of the following pairs is not correctly matched? लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ अवध सही है। लॉर्ड डफरिन सही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बेनेडिक्ट पासिंग द चार्टर एक्ट 1833, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट सही है। हाँ, यहीं से मान लो ये मोनोपोली खत्म हुई। लॉर्ड लिटन बिगनिंग ऑफ फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, लिटन नहीं थे, ये तो बहुत बाद में आए थे। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार 1839 to 1842 took place during Lord Auckland's tenure. Lord Lytton 1876 to 1880 oversaw the second Anglo-Afghan War 1878 to 1880. Lord Dalhousie annexed Awadh 1856 on ground of misgovernance. Lord Dufferin 1884 to 1888 was Viceroy when INC was founded in 1885. Lord William Bentinck passed the Charter Act 1833 centralizing British administration. Who among the following is associated with policy of masterly inactivity? John Lawrence. Masterly inactivity was the British policy towards Afghanistan during 1842 to 1878, advocating non-intervention. John Lawrence 1864 to 1869 supported this policy, avoiding wars in Central Asia. Second Anglo-Afghan War 1878 to 1880 under Lord Lytton ended this policy. पेशवाशिप एवोल्यूशन कब हुआ था? 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने ख़त्म किया था। बालाजीराव टू ऐसे कुछ नाम था। सब्सिडरी अलायंस 1798 लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स 1848 लॉर्ड डलहौजी। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार 1839 to 1842 लॉर्ड ऑकलैंड। सेकेंड एंग्लो अफगान वार लॉर्ड लिटन 1878 to 1880। मास्टरली इनएक्टिविटी अफगानिस्तान को लेके था ये 1842 to 1878 जॉन लॉरेंस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 to 1793 परमानेंट सेटलमेंट सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 to 1805। सब्सिडरी अलायंस फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ठीक। लॉर्ड हेस्टिंग थर्ड एंग्लो मराठा वार और एंग्लो नेपाल वार 1830 to 1823। फिर लॉर्ड डलहौजी 1848 to 1856 डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स रेलवेज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। एलनबर्ग 42 to 44 एनेक्सेशन ऑफ सिंध और एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 1843। लॉर्ड डफरिन 1848 to 1888 इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। हु इंट्रोड्यूस्ड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया? लॉर्ड मायो। Financial decentralization was introduced during Lord Mayo's tenure 1869 to 72. In 1870, it marked the beginning of provincial finance by delegating financial responsibilities to provinces. This policy allowed local governments to manage revenues and expenditures. Financial decentralization in India by Lord Mayo. This policy लॉर्ड मायो कब 1869 से 72 तक, मतलब 1872 में 1870 में उन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की, ठीक। इसका इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस बाय डेलीगेटिंग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रोविंस। दिस पॉलिसी अलाउड लोकल गवर्नमेंट्स टू मैनेज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स।
Lord Ripon known for local self-government 1882 but not financial डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए लॉर्ड रिपन को जाना जाता है और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए लॉर्ड मायो। डलहौजी को देखा जाए, लॉर्ड डलहौजी फोकस्ड ऑन रेलवेज, टेलीग्राफ एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लॉस। चार्ल्स मेटकैफ को नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस 1835। चार्ल्स मेटकैफ। ओके, the first census of India during the British period was held during the लॉर्ड मायो। उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के पहला फर्स्ट सेंसस ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872 अंडर लॉर्ड मायो। हाउएवर फर्स्ट कंप्लीट एंड रेगुलर सेंसस वाज हेल्ड इन 1881 under Lord Ripon. This census helped understanding population, demographics and planning policies. Lord Dufferin 1848 to 1888 known for Indian National Congress formation. Lytton 1876 to 1880 introduced Vernacular Press Act 1878. Lord Ripon Lytton ने Vernacular Press Act और Lord Ripon conducted first regular census 1881 and introduced local self-government 1882. Who was the person to conduct census in India for the first time? Lord Mayo 1872. It was not a complete census but an attempt to gather demographic data. Lord Ripon conducted first Lord Ripon ने conduct किया था first regular census in 1881. Lord Lytton introduced the Arms Act 1878 and Vernacular Press Act 1878. Lytton ने वो किया था. Lord Dufferin served as Viceroy during Indian National Congress formation 1885. Which of the following Viceroy of India was murdered by a convict in Andaman and Nicobar Island while he was on tour? Lord Mayo. Lord Mayo, Viceroy 1869 to 1872, was assassinated on 8 February 1872 in Andaman by Sher Ali Afridi, a convict. He was the first Viceroy to be murdered during his tenure. Lord Curzon, known for partition of Bengal and Indian Universities Act 1904. Lord Ripon introduced local self-government 1882 and repealed Vernacular Press Act 1882. Lord Minto 1905 to 1910 introduced Morley-Minto reforms, giving separate electorates to Muslims. Morley-Minto reforms. Which of the following statement about Lord Mayo's resolution of 1870 is correct? It was the first step to bifurcate central and provincial finances. बिल्कुल सही है. डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वेर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज. सही है. It attempted to rectify existing imparity. It focused on actual needs of provinces. Lord Mayo's resolution of 1870 was financial decentralization policy. It divided financial responsibilities between center and provinces. It gave provincial governments power over services like education, roads, sanitation, and medical relief. Paved the way for financial reforms under Indian Council Act of 1892. स्ट्रेंथन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे लॉर्ड रिपन ने आगे चल के वो किया. द गवर्नर जनरल हु फॉलोड ए स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज लॉर्ड लिटन. Lord Lytton, Viceroy 1876 to 1880, adopted forward policy towards Afghanistan. This policy increased British intervention in Afghan affairs. Led the Second Anglo-Afghan War 1878 to 1880, aiming to counter Russian influence in Central Asia. Lord Lytton ने किया. Lord Minto, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909. Lord Dufferin
फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, लॉर्ड इल्गिन सर्ड वाइसराय फ्रॉम 1862 to 63, focused on administration. Lord Elgin, viceroy who followed aggressive policy towards Afghanistan was Lord Lytton. मतलब उन्होंने लॉरेंस का पॉलिसी को हटाया, मास्टरली इनएक्टिविटी का और एग्रेसिव पॉलिसी. लॉर्ड लिटन्स एग्रेसिव पॉलिसी लेड टू सेकेंड एंग्लो अफगान वार 1878 to 1880. It aimed to establish British influence in Afghanistan, ended with Treaty of Gandamak 1869. Lord Mayo focused on financial decentralization and census 1872. Lord Dufferin handled Congress formation 1885. Lord Canning introduced Indian Consulate 1861 and Hindu रीमैरिज एक्ट 1856. ठीक, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से. फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लॉर्ड मायो 1870 में. फर्स्ट सेंटर 1872 लॉर्ड मायो. फर्स्ट रेगुलर सेंसस 1881 लॉर्ड रिपन. एसेसिनेशन ऑफ वाइसरॉय 1872 लॉर्ड मायो. फॉरवर्ड पॉलिसी लॉर्ड लिटन. सेकेंड एंग्लो अफगान वार 1878 to 1880 लॉर्ड लिटन. लॉर्ड मायो 1869 to 72 फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन सेंसस मर्डर्ड इन अंडमान. लॉर्ड रिपन 1880 to 1884 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेगुलर सेंसस 1881. लॉर्ड लिटन 1876 to 1880 फॉरवर्ड पॉलिसी. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878. आर्म्स एक्ट 1878. ठीक है, ठीक, तो यहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं, अब आगे चलेंगे फिर बाद में. ठीक, थैंक यू, बाय बाय.